from the slideshow from the current slide. So before we start today's session, थोड़ा आइडिया लेंगे कि जो हमने किया था उसके बारे में, और उसके साथ साथ आज हम लोग एक्चुअल में अप्लाई करने वाले हैं whatever we have learned, that is Laplace transform with derivative. अच्छा, क्लियर नहीं सुनाई दे ओके ओके, मैं थोड़ा माइक मेरे पास रखता हूँ. ओके, सो व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेरिवेटिव्स के लाप्लास निकालने को सीखेंगे. उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्वोल्यूशन. दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन. बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी हैव लर्न ऑलरेडी. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, चीजों को एक बार फटाफट से याद कर लेंगे. हमारे पास क्या था? लाप्लास इज अप्लाइड ऑन अ रियल वैल्यू फंक्शन, राइट? उसके अंदर वेरिएबल भी रियल था, बट आउटपुट जो होगा दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, यानी कि उसका इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. दिस s इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द आंसर इज इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. The only restriction that we had is nothing but real of s should be greater than 0. Those students should always think about why we are considering real of s greater than 0. लास्ट टाइम किसी ने इसको रेज भी नहीं किया था क्वेश्चन को कि ये real of s greater than 0 का यूज क्या है, बट एवरी वन ऑफ यू शुड थिंक अबाउट इट कि ये greater than 0 क्यों है. इफ यू सी, हर एक फॉर्मूला में हमने उसको कहीं ना कहीं यूज किया था, लेकिन डिस्कस नहीं किया था. Suppose if I have a function 1, constant function, then the Laplace was 1 by s. Suppose if I have the function e raised to at, then the Laplace 1 by s minus a. Today we are going to need each and every formulas to solve the previous year question. तो एक बार वापस से नोट डाउन करेंगे. sin at जो है उसका लाप्लास होगा, it is a upon s square plus a square cos at. That was an exercise for all of you. So exercise question का आंसर था s upon s square plus a square. Then we have sin ht. The formula was a upon same formula but with a negative sign. Cos at का same formula होगा cos h8 the negative sign. S square minus a square. Then we have t raised to n. The Laplace is nothing but n factorial divided by s raised to n plus 1. We can generalize to t raised to a is nothing but gamma of a plus 1 divided by s raised to a plus 1. Then one of the two important formula, Bessel function of zero order at. Answer was 1 by square root of s square plus a square. इसे हम लोग ने सिर्फ नोट किया था. Similarly, J1 first order at was nothing but 1 by a, same thing multiplied with s square plus a square minus 1. Then we have learned some of the properties of Laplace transformation. सबसे पहला था कि अगर मेरे पास फंक्शन है, if I multiply that function with e raised to minus at, then I will get the same answer but with the shift of a. So it will be f of s plus a. याद रखेंगे, ऊपर माइनस a था, यहाँ पे प्लस a का शिफ्ट मिल रहा. Suppose if I have f of a t plus b, then the answer is same as 1 by a e raised to s b by a f of s by a. Then एक इंपॉर्टेंट सा चीज देखा था, स्टेप फंक्शन. स्टेप फंक्शन किस तरीके से काम करवा रहे थे हम लोग? हमने देखा था कि if I have a f of t minus a multiplied with h of t minus a, where this is nothing but the step function, then the answer would be same as f of s or multiplied with e raised to minus s. These are the basic things that we have covered in the last class. ठीक है, आज का सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, हर एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, और आई थिंक जितने भी फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर है, दैट वुड बी समवेयर मोर देन इनफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर दिस MHSET एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आज ऐसी चीज देखेंगे, अप्लाइंग लैप्लास टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो हम लोग डेरिवेटिव्स और लैप्लास का कनेक्शन देखने वाले हैं. Suppose if I have a function f of t जिसका लैप्लास है कैपिटल F of s, my task is to find out the Laplace of f dash of t. ये मुझे फाइंड आउट करना है. बाय फॉर्मूला ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to minus ts टाइम्स द फंक्शन. फंक्शन इज नथिंग बट f dash of t जिसका मुझे लैप्लास निकालना है. So हम लोग बहुत ही इजीली u into v रूल लगा देंगे. So u into v rule, this is my u, this is my v. So e raised to minus ts integration of f dash of t is nothing but f of t
applied at 0 infinity minus integration 0 to infinity derivative of e raised to minus t s with respect to t. अगर मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया with respect to t, then the answer is nothing but e raised to minus ts times minus s. Integration of this is nothing but f of t dt. So now if I substitute the limit, I'll get 0 minus f of 0, right? अगर infinity रखा तो e raised to minus infinity 0, and if I substitute 0, it is e raised to 0 1 and f of 0. Now this minus minus plus s, integrating 0 to infinity f of t e raised to minus ts dt. If I see carefully, this inside the integral part is actually nothing but Laplace. I can replace that by f of s, right? Is it okay? ये f of s ठीक है? Do let me know, TY students. Yes. Okay. So what we found, if I have a function जिसका Laplace already मुझे पता है, sorry यहाँ पे minus का प्लस साइन होगा. लास्ट टाइम तेरा स्क्रीन इससे बड़ा था, वो अच्छा लग रहा था. एक सेकंड ना मैम, स्क्रीन, लेट मी जस्ट चेक माय स्क्रीन, फुल स्क्रीन है कि नहीं है. कहाँ पे गया? मैं पिन कर देता हूँ उसको. फुल ही है आई थिंक. हाँ यस है ना Ma'am, we can just pin the presentation which हाँ. he is presenting. ओके ओके हाँ, because So full that we screen. can see it properly. Correct. ओके. So what we found, suppose अगर मेरे पास मेरे फंक्शन का लैप्लास मुझे पता है, then उसके डेरिवेटिव का जो लैप्लास होगा, that would be same as s times Laplace of the original function minus f of 0. So अगर आपको डेरिवेटिव के लैप्लास की जरूरत है तो सिर्फ आपको उस फंक्शन का वैल्यू चाहिए एट 0, बाकी ओरिजिनल फंक्शन का आप लैप्लास ढूंढ के ले लो. ठीक है? So this is one of the formula that would be required to us again and again, because main reason to study the integral transform is nothing but to solve ODE. अगर ODE solve करना है तो आपके पास Laplace of derivative निकालने आना चाहिए, right? So this is first formula that we found. एक बार इसको नोट करें फॉर्मूला को. So what we are going to do is we are going to generalize this result. अगर f डैश ये है तो f डबल डैश का लैप्लास क्या होगा? अगर वो है तो f रेज टू n, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होगा? Once you are done noting the formula, do let me know in the chat box. Okay, then I'll continue. Chat box, yeah. Yes. F dash of t का Laplace is s f of s minus f of 0. Okay, thank you. So let us just generalize this. Suppose अगर मेरे पास क्वेश्चन को आगे बढ़ाता है कि suppose if I want to find out, okay, pen, this one. Okay, suppose if I want to find out now Laplace of f double dash of t converted to the variable s is nothing but integrating 0 to infinity e raised to minus ts f double dash of t dt. Again u into v will give rise to e raised to minus ts. f double dash of t का डेरिवेटिव होगा f dash of t, लिमिट होगा 0 to infinity minus integrating 0 to infinity e raised to minus ts का डेरिवेटिव अभी अभी निकाल चुका है, right? It is simple as well, minus s f dash of t dt. Like I should change the pen का कलर, अच्छा नहीं लग रहा है. So this is same as 0 minus f dash at 0 minus minus plus s integrating 0 to infinity f dash of t e raised to minus ts dt. Hence what I get is minus f dash at 0 plus s times, I can say this is nothing but Laplace of f dash of t converted to the variable s, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने निकाला भी.
उसका फॉर्मूला क्या था? तो लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी वाज एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. इफ आई सी दिस, अगर सिंप्लीफाई लिख करेंगे तो इट इज एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश एट जीरो. So this is nothing but Laplace of f double dash of t converted to variable s. And if I just generalize this result, I get this. यहाँ पे small f dash यानी कि हमारा capital F है. ठीक है, see that result, final जो result है generalize. I request all of you just note down the final result. So if you want to find out Laplace of f का second order derivative, then you require two things. सबसे पहले आपको लैप्लास तो चाहिए ही, यू नीड एफ ऑफ एस, उसके साथ साथ यू नीड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो एफ डैश एट जीरो. सपोज अगर आपको लैप्लास ऑफ एफ का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यू विल रिक्वायर एफ ऑफ जीरो एफ डैश एट जीरो एफ डबल डैश एट जीरो. So this final formula is really important. Please note it down. इसके बाद करेंगे कन्वोल्यूशन. यस, लेट्स सी द कन्वोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल. आगे बढ़े, नोट किया फाइनल फॉर्मूला को? Do confirm in the chat box. Yes, okay. So now after learning about derivative, हम लोग उसका एप्लीकेशन आज ही देखेंगे, बट कुछ चीजें नोट करने दूंगा. नोट इन द सेंस इट वुड बी एन एक्सरसाइज, एन इजी एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हम लोग ने अभी अभी की, उसी चीज को आप पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर भी कर सकते हो. And by using this, you can apply your Laplace transform in PDE as well. हम लोग ने जो चीज किया, this is exactly the same thing. यहां पे हमारा ये जो फंक्शन u है, it is in two variable. u is in two variable x and t. और Laplace जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसको आप वेरिएबल s में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. सो t जो है वो s में कन्वर्ट हो रहा है. सो वट एवर वी हैव डन अर्लियर, उसी चीज को पार्शियल डेरिवेटिव में आपको सेम चीज मिलेगा, है ना. सो इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट s टाइम्स द लैप्लास माइनस f ऑफ जीरो, s स्क्वायर लैप्लास माइनस s टाइम्स f ऑफ जीरो f डैश एट जीरो. यहां पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे ना, तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस शुड थिंक कि ऐसा क्यों आ रहा है. अगर वेरिएबल x है, then it is nothing but only derivative of the final answer. U bar is nothing but Laplace of u. What is the notation? The notation is like this. If it is xt converted to s, then the answer is nothing but u bar x comma s. Right? So आप हर किसी के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज या फिर थिंकिंग रहेगा, ये जो फॉर्मूला है किस तरीके से आ रहा है ना. जो चीज हमने की सेम चीज पार्शियल डेरिवेटिव के लिए रहेंगी. मैं सेशन के बाद आपके साथ नोट शेयर करूंगा, तो आपको ये होमवर्क प्रॉब्लम भी मिल जाएगा वहां पे. ठीक है, ओके. सो नाउ वी कम टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट कन्वोल्यूशन. We know how to add a function, we know how to multiply functions normally, but over here we defined a special type of a multiplication which has a great connection with Laplace transform. First of all, let me just define that multiplication, and slowly we will go how it is connected to Laplace transform. So convolution is nothing but operation between two functions defined as f of t. Convolution is denoted by this asterisk sign, we will call it a star, g of t. So this is nothing but operation between two functions defined as integration 0 to t of t minus tau g of tau integrating with the variable tau. So अगर आपके पास दो फंक्शंस है f and g,
You want to find convolution of that, यानी कि we are just applying the operation of convolution. The answer is obtained by integrating f of t minus tau g tau with respect to tau on the interval of 0 to tau. This is called convolution of f of t and g of t. ठीक है, तो हमें अभी के लिए इस डेफिनेशन की जरूरत है, स्लोली स्लोली इसके साथ कंफर्टेबल होता है. सबसे पहला काम करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन लेंगे, उनकी कन्वोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मूला जो है वो नोट डाउन करके रखेंगे. व्हाट इज कन्वोल्यूशन? इट इज नथिंग बट ऑपरेशन बिटवीन टू फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस. व्हाई वी आर डिफाइंडिंग, थोड़ी देर में कन्वोल्यूशन थ्योरम उसका आंसर देगा हमें. नोट किया सबने फॉर्मूला कन्वोल्यूशन का? What is the convolution of two function? Confirm करेंगे chat box में. Thank you. Let us just find out the convolution to AT. So formula क्या कहता है? This is same as integrating 0 से लेके t. First function, this is my function f of t and this is my function g of t. I want first function f t minus tau. So t should be replaced by t minus tau. So it is e raised to a, t is replaced by t minus tau, g of tau. So it is nothing but tau d tau. This is same as integrating 0 to t, e raised to at, e raised to minus a tau, tau d tau. Since I am integrating with respect to tau, I can consider e raised to at as a constant. उसको बाहर ले लिया. Integrating 0 to t, u into v लगाएंगे फिर यहाँ पर, right? So u into v लगा होगा तो e raised to at as it is. First, as it is, integration of e raised to minus a tau is nothing but this. Applying the limit 0 से लेके t minus integrating 0 t. Derivative of tau with respect to tau is 1. Integration is e raised to minus a tau divided by minus a, integrating with respect to tau. So the final it is e raised to at. अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो इट इज नथिंग बट t e raised to minus at divided by minus a. जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट? आगे इट इज माइनस माइनस प्लस 1 by a. अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो e raised to minus a tau divided by minus a. इंटीग्रेटिंग है तो लिमिट रख देंगे. And after simplifying, everyone should verify whether the answer is same as or not. 1 by a square e raised to minus at minus at minus 1. So I'll give you some time. Final जो आंसर है वहां से ये स्टेप तक पहुंचा ना. Try to get this as your answer. Simplify करना because I don't have the space. मुझे कुछ erase नहीं, and it is simple step. So I request all of you, please try to solve this. Just a simple substitution. This convolution is one of the important topic because वो Laplace के साथ जाता है. उसके साथ साथ I think examiners जो होते हैं MH-SET बनाने वाले, उनके लिए भी ये बहुत फेवरेट टॉपिक है. Every year और almost alternative year कोई ना कोई क्वेश्चन convolution पे आ जाता है. Either they ask direct formula या फिर ऐसे easy फंक्शन के convolution निकालना. Just verify is this answer correct after simplifying. Everybody. अच्छा into yes. Oh मैम का. What about others? ठीक है क्या?
After simplifying, it is 1 by a square e raised to at minus ad minus 1. So convolution of e raised to at with t is nothing but 1 by a square e raised to at minus ad minus 1. I request all of you कि प्लीज इसको याद रखिएगा, थोड़ी देर बाद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, so अभी आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा फंक्शन मैं आपको देता हूं t का convolution with t. I want to find out this convolution. So by the formula it is nothing but integrating 0 से t, it is function in terms of t minus tau. So it is t minus tau times tau d tau. Okay, just integrate this and let me know whether the answer is t cube by 6 or not. Please verify. Okay. This is my g f, this is f of t, this is my g of t. So this is my f of t minus tau and this is my g of tau. Correct. So once we find out two of the convolution, we would be somewhere comfortable to go for convolution theorem, right? Okay. So let us just go to the important part. Why we defined that convolution like this, right? So the answer of that question would be given after this. Simple सी properties है, सिर्फ मैं list करने वाला हूँ properties. Properties are this convolution is a well defined operation on the function. क्या है तो it satisfy associativity, it satisfy commutativity, it satisfy distributivity, and that could be taken in general. ठीक है, so this convolution satisfy all these properties. आगे पीछे करोगे still it will satisfy commutativity, associativity है, आप distribute कर सकते हो. अगर आपके पास कोई constant है तो आप उस constant को आगे ले सकते हो. And don't see this last two. This last two are actually the important one. ये लास्ट दो को हम लोग देखेंगे, बट पहले तीन प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहे हैं? इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी. यस, अगर आपने आगे वाला फंक्शन देखा रहेगा ना, सो अवर फर्स्ट फंक्शन वाज t का कन्वोल्यूशन विद e रेज़ टू at. अगर मैम आप उसको उल्टा निकालने जाओगे ना तो इट टेक्स टाइम. अगर सीधा निकालोगे तो इस तरीके से इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी फॉर श्योर. एंड इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड आल्सो. ये एमएच सेट में नहीं पूछा था बट किसी और एग्जाम में आई थिंक मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन के ऊपर, राइट? एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है. लास्ट की दो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला हम लोग, दैट इज नथिंग बट कन्वोल्यूशन थ्योरम. The main reason for defining the convolution like this is because अगर suppose मेरे पास दो फंक्शन है f of t and g of t, I have a convolution of them. Agar suppose I want to find out the Laplace of this convolution, then the answer is same as Laplace of f of t into multiplication with Laplace of g of t. So that is the main reason for defining the convolution like this. So वही here मैंने आपको दो चीजें एक साथ बताई कि जो लाप्लास है उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है. उसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन था कि ये कॉन्वोल्यूशन लाप्लास के ऊपर स्प्लिट होता है. सो नेचुरली सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, सपोज इफ आई चेंज माय ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्वोल्यूशन का डेफिनेशन क्या चेंज होगा? आंसर इज यस. The convolution definition that we use that is applicable for Laplace transform. अगर हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो वहां पे कॉन्वोल्यूशन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है. बट लकीली फॉर दिस एग्जामिनेशन कॉन्वोल्यूशन हैज बीन स्टडीड फॉर लैप्लास ओनली. अदरवाइज हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप अलग अलग तरीके से लैप्लास डिफाइन कर सकते हैं. बट द मेन रीजन बिहाइंड डिफाइनिंग द लैप्लास या फिर इसका डेफिनेशन कैसे जनरेट होता है, सो डेफिनेशन वुड बी जनरेटेड सच दैट अगर आप लैप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन निकालने जाओगे तो आंसर वुड बी सेम एज लैप्लास ऑफ द प्रोडक्ट. क्वेश्चन लाइक I want to find out the Laplace of t star t, whatever it is, but I know the answer would be same as Laplace of t multiplied with Laplace of t. Actually this is a simple question but I just want to see how it is applicable. Laplace of t is nothing but
यस, व्हाट वुड बी द लैप्लास ऑफ टी? याद है फॉर्मूला? सिद्धांत. Yes, what is the Laplace of t? Because without formula we will not reach anywhere. It was, yes, it was 1 by s square. ठीक है. Laplace of t raised to n was n factorial divided by s raised to n plus 1. Okay, so it is 1 by s square, 1 by s square. Your final answer is 1 by s raised to 4. बट उसके साथ साथ ये कॉन्वोल्यूशन बहुत सिंपल दिखता है कि हाँ, एक ऐसा हम लोग ने प्रोडक्ट डिफाइन किया बिटवीन टू फंक्शन जो लैप्लास के ऊपर स्प्लिट होता है, बट इसी सिंपल चीज के ऊपर बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज लैप्लास ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर e raised to at minus at minus 1. ठीक है. So this kind of a question will not be asked because it is something difficult, but something that we have learned we can apply here. What would be the answer in this case? One way is you can directly split it or फिर individually Laplace निकालने जाओ. But since अभी हम लोग ने देखा था, this inside part is actually the convolution of e raised to at with t. Hence, the answer of this is nothing but Laplace of e raised to at multiplied with Laplace of t. And the Laplace of e raised to it is 1 by s minus a, and Laplace of t is nothing but 1 by s square. So this is nothing but your answer. There are multiple types of question has been asked on this. Slowly करेंगे, but अभी के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं कि convolution किस तरीके से define किया, how to find out convolution of a simple function, and the most important thing is convolution theorem. States that Laplace of convolution of two function is same as product of Laplace of individual functions. ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि Laplace थ्योरम के अंदर इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट किया जाए. Laplace inverse and integral equations. Those are the two topics which are left. Once you are done noting the property theorem, do let me know in the chat box. Then we can go for the problems. Inverse Laplace, inverse Laplace. Okay. I think ये हमने अभी डिस्कस किया. This is considered as a homework. बहुत ही सिंपल सा है. Laplace of this convolution with this. Inverse Laplace transform. Whatever we have learned, आप उसी चीज का inverse भी कर सकते हो, as we have learned in the transformation as well. अगर suppose मेरा linear transformation invertible है, तो उसका inverse जो होगा that is also works as a linear transform. तो यहाँ पे Laplace का जो inverse होगा that also works as a transform. This is nothing but the definition of Laplace inverse. जैसे कि अगर मेरे पास Laplace of f of t converted to variable s was capital F of s, then my Laplace inverse of capital F of s converted to the variable t would be small f of t. तो ये उसी चीज को उल्टा करना है. फॉर्मूला यहां पर दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली अ रियली कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. Even in our masters we haven't used this formula. हम लोग Laplace inverse कैसे निकालेंगे फिर? By using the properties that we have learned. हम लोग को जिसका फॉरवर्ड Laplace पता है उसी का हम लोग इनवर्स करने की कोशिश करेंगे. सो ये जो फॉर्मूला है उसको नोट नहीं किया तो भी चलेगा, बट ओनली थिंग दैट वी शुड नोट इज जो Laplace सीधा जाता है उसी को हमें उल्टा करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसको नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली. हम लोग क्या करेंगे, जो भी करेक्ट वे से जा रहे थे फॉरवर्ड वे से जाएंगे, उसको बैकवर्ड जाने की कोशिश करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन था भी, कि सपोज आई वांट टू फाइंड आउट Laplace inverse of 1 by s minus a. Whenever we see the question, we see there are two things, 1 by s दिख रहा है और 1 by s minus a दिख रहा है. तो ये दोनों का मुझे Laplace पता है, ये किसके Laplace है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो
Laplace of something is 1 by s, so that function is 1, correct, converted to s. And also I know that ऐसा कौन सा function है जिसका Laplace 1 by s minus a होता है, so that is nothing but e raised to at. Oh sorry, so it is I think e raised to at converted to s. So Laplace inverse of 1 by s would be 1, and the Laplace inverse of 1 by s minus a would be e raised to at. Now by using this मुझे उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है. So what we do, we ये जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. फॉर एन एग्जांपल 1 by s minus a, I can write this is same as 1 by s, बीच में अगर माइनस करना है तो s minus a ले लेता हूं, minus 1 by s whole thing divided by a. If I simplify this, I get 1 by s minus a. Correct? Just check it once. And after that, if I want to find out Laplace inverse of 1 by a, 1 by s minus a minus 1 by s, then the answer is same as, ये देखो 1 by a is the, since it is a linear transformation, constant scalar जो मैं बाहर निकाल दूंगा, then it is Laplace of this. उसका Laplace inverse क्या है? Laplace inverse is nothing but e raised to at minus Laplace inverse of 1 by s, that is 1. So this is nothing but how we found the answer of Laplace inverse. और जो पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे. जो भी फॉर्मूला मैंने आपको इससे आगे बताया, दैट फॉर्मूला विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज वहां पे हमें इंटीग्रेट करना है ऑन द नेगेटिव एक्सिस, यानी सॉरी कॉम्प्लेक्स एक्सिस के ऊपर इंटीग्रेट करना है. फॉर दैट हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत पड़ती है. सो दैट विल टेक टू लॉन्ग टाइम टू कैलकुलेट. तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे. अगर आपको फॉरवर्ड लैप्लास पता है उसका ही हमें इनवर्स निकालना है. Please go through this example anywhere, any place. If you have any doubt, be free to ask. I don't know. I think I'm going fast. Might be because मुझे थोड़ा रिपीट करना. I'll repeat it. मुझे लगा कि थोड़ा मैं फास्ट चला गया because शायद मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि करना है. बट कोई बात नहीं. नेक्स्ट टॉपिक अगर बचेगा तो I'll cover it in the next class. So what we are doing is we want to find out the Laplace inverse of this function. The first thing that we can do, we know this Laplace is not distributable. Laplace inverse, more precisely, is not distributable over multiplication. है ना? उसके बारे में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सिचुएशन में क्या करना चाहिए. बट अभी के लिए हमें पता है Laplace ट्रांसफॉर्म यानी कि वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की जैसा काम करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्म की जैसा. यानी कि ओवर एडिशन वो स्प्लिट होता है एंड स्केलर्स को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं. सो गिवन जो भी चीज थी मेरे पास, गिवन जो भी फंक्शन था, I try to convert this into addition and the scalar multiplication. So what I did, 1 by s minus a, so I try to write as sum or difference of two things. So it was nothing but 1 by s minus a. I'll just be more precise because अच्छे से ही start करता है. So I consider 1 by s minus a minus 1 by s. I just try to simplify this. This is nothing but s minus a upon s minus a. The numerator becomes a divided by s minus a. So मुझे जो चाहिए था, that is nothing but 1 by s minus a came out to be 1 by a, 1 by s minus a minus 1 by s. So मेरा जो फंक्शन था that I can replace by this. What is an advantage now? अब मेरे पास Laplace inverse of something है where I have a scalar product, sorry scalar multiple और addition और subtraction है बीच में. मेरे पास product नहीं है. If you see, that was 1 by s times 1 by s minus a. We cannot directly do the splitting of L inverse over multiplication, but addition subtraction के ऊपर हम लोग split कर सकते हैं. So my Laplace inverse of 1 by a, 1 by s minus a minus 1 by s converted to the variable t. हमें इसको निकालना है. Given question is same as this now. Now since it is a transformation, scalar को बाहर निकाल दिया. This 1 by a we just took outside. Laplace inverse of this, है ना, that we have already noted down.
Laplace inverse of 1 by s minus a is e raised to at minus Laplace inverse of 1 by s, that is nothing but 1. ठीक है मैम? Yes, yes, ओके, yes. सो समथिंग दैट वी हैव नोट कि यहाँ पे प्रोडक्ट था तो हम लोग ने क्यों नहीं किया, उसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए, बिकॉज उसी का आंसर थोड़ी देर में मिलेगा. बट इज दिस क्वेश्चन ओके टू एवरीबॉडी? Laplace इनवर्स निकाला हमने, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था. आई वोंट से कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर नाउ. ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की ओर. एवरीवन, यस, ओके. सो हियर हमने जो देखा था ना, ये उसी का एप्लीकेशन है. कन्वोल्यूशन थ्योरम जो था वही था. कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता था? इफ आई हैव लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी convolution with g of t converted to the variable s, the answer was same as the product of Laplace of individual function. तो उसी चीज को इनवर्स लगा दिया ऑन बोथ द साइड. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि ओवर प्रोडक्ट हम लोग क्यों स्प्लिट नहीं करते, बिकॉज अगर ओवर प्रोडक्ट अगर आप स्प्लिट करने जाओगे तो आपको वहां पे कॉन्वोल्यूशन निकालना होगा. यानी कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली अगर आप आंसर चाहते थे 1 अपॉन s माइनस ए कन्वर्टेड टू t, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता? इसका इज 1, इनवर्स इज 1, उसको यू हैव टू टेक कॉन्वोल्यूशन विद दिस. कॉन्वोल्यूशन, इसका इनवर्स क्या था? इट वाज नथिंग बट e रेज्ड टू at. And if you find out the convolution, you get the same answer. Okay, so this is how the question would be asked. They will always try to connect convolution with inverse, because these are nothing but the two of the most difficult thing that they have kept in the portion: convolution and inverse function, inverse Laplace. So this is something that we should note, but note करने की जरूरत नहीं होगी, because जिनको भी convolution theorem समझ गया तो उसी का inverse करना है और कुछ नहीं. Suppose if I have the question to find out the Laplace inverse of s square 1 upon s square into s square plus a square. The answer for this is nothing but ये 1 by s square का जो convolution होगा वो 1 by s square का Laplace क्या होता है, यानी कि f of t क्या होगा in that case? If this is my f of s, what is my f of t for 1 by s square? I'll try to write it in more detail. Yes, it is t. Perfect. So this is nothing but 1 by s square times 1 by s square plus a square converted to t. So by this we know that it is, इसका इनवर्स होता है t, तो t लिख दिया. कॉन्वोल्यूशन, ऐसा कोई फंक्शन था आपके पास जिसके लिए लैप्लास ये आता हो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर? ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके लिए लैप्लास ये आता था 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर? Any such function 1 upon s square plus a square? And if you see or you go through the formula list, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं था, बट कुछ तो एक रिलेटेड फॉर्मूला था, है ना? वी हैड अ फंक्शन जिसका लाप्लास आता था a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. व्हाट इज दैट फंक्शन? Sin 80. Yes, it is sin 80. Over here, this a is nothing but a constant. So what I do, I just multiply this with a constant a and divided by a. Since it is Laplace, so ये a को मैं बाहर ही लिख देता हूँ 1 by a. So now Laplace inverse of this is nothing but sin 80. So the answer for this Laplace inverse is 1 by a t का convolution with sin 80. So this is how we apply this theorem. Please try to analyze what we have done. If you have any doubt, please ask. Yes. No doubts. Okay. So what I was planning was I will introduce this integral equations
मैम दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन टू टॉपिक्स। क्या होता है ना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एमएचसेट एग्जामिनेशन में इंटीग्रल इक्वेशंस करके एक अलग से टॉपिक है। तो दिस इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन लैप्लास एंड इंटीग्रल इक्वेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट माइट टेक 20 to 30 minutes. I want to spend my next time with all of you to discuss some problems. ठीक है, first problem that I'm going to show is purely a simple question for all the TY students. आपको जब भी टाइम मिले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रॉब्लम बिकॉज TY स्टूडेंट आई वांट टू गिव समथिंग इंटरेस्टिंग। व्हाट इज आई रेज टू आई? बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको बिकॉज ये लाप्लास के कनेक्शन में नहीं आ रहा, बट एवरी TY स्टूडेंट शुड थिंक ऑफ दिस। एंड विद दिस आई जस्ट वांट टू शो MHSET एग्जामिनेशन डोंट आस्क द टॉपिक्स के अंदर बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आई रेज टू आई समथिंग विच इवन अ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन थिंक ऑफ दिस समथिंग सम वे समहाउ विदाउट नोइंग व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्टिल दे कैन डू। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आप उसको जरूर देखना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑफ MHSET from 2019. This is nothing but the question. I'll give you few seconds to think of this. Once you give me the answer, हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। Just read the problem. Try to take as much less time as possible. जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्व करना है, because MHSET examination is such कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है, right? So we should be always quick. प्रैक्टिस करते वक्त भी read the question, try to analyze. Once you get any key जो भी आपको right लगता है, do let me know in the chat box. जो भी key आपको सही लगता है। If someone of you gives the wrong key, then I will discuss. अगर हर किसी को सही key मिल जाता है, then we can go for the next problem. Yes, the option A. What about other? मंदार, okay. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ऑप्शन ए राइट है क्या? Yes, if you see, this was one of the property of Laplace transform. और आप और एक चीज नोट करोगे, this is not an old problem. ये 2019 में पूछा गया है ना। 2019 में they are asking you the direct property of a Laplace transformation. अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पक्का लिखा हुआ रहेगा, right? So option A is the correct answer because this was one of the property that we have actually proved as well, है ना। अगर आपके पास फंक्शन है, आप उसको यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर वुड गेट मल्टीप्लाइड विद e रेज टू माइनस as. ठीक है, एवरीबडी अग्रीज? ये हमने किया हुआ था प्रॉब्लम। ए आंसर किस तरीके से आया? इफ यू आर अनेबल टू डू इट, फिर भी आप इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो, है ना। इसका प्रूफ भी हमने देखा था। यस, कैन वी गो अहेड? मैम ठीक है चित्रा मैम, ये ऑप्शन ए। Yes, okay. Let's see the next problem again from the same year. See this. This is one of the interesting question. देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। Suppose that I have a function y of t satisfies this differential equation with the initial condition y of 0 भी दिया है, y dash of 0 भी दिया है। Then we need to find out. See how simple they have made the question. They are just asking you the Laplace transform of y of t. उन लोग ने आपको बोला है सॉल्व भी नहीं करना है आपको सिर्फ Laplace transform of y of t देना। So let us just discuss this together because हम लोग ने क्या किया था ना, Laplace डेरिवेटिव निकाला था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, तो साथ में करता है। So Laplace of y of t converted to variable s, suppose this is nothing but capital Y of s. Then my Laplace of y dash of t converted to the variable s would be by the formula, this is s y of s minus y at 0, that is nothing but s
y of s, y at 0 उन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दिया है 0, सो दिस इज नथिंग बट s y of s. नाउ लैप्लास ऑफ y डबल डैश भी चाहिए, कन्वर्टेड टू वेरिएबल s. तो ये क्या था, तो s स्क्वायर से स्टार्ट करो, y ऑफ s, s का पावर एक एक रिड्यूस करो, और y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0. ठीक है, ये सही है. I think yep. So this is nothing but s square y of s. This is 0 minus y dash, this is 3. So this is nothing but s square y of s minus 3. So this is nothing but Laplace of y double dash of ts. Now what we will do, हमें सिर्फ ये जो equation है, suppose it is equation 1, we just take Laplace of equation 1. अगर सपोज मैंने इक्वेशन 1 का लैप्लास ले लिया, देन द आंसर इज सेम एज y डबल डैश का लैप्लास, इट इज नथिंग बट s स्क्वायर y कैपिटल Y, सपोज मैं लिखता हूं y ऑफ s की जगह पे -3 -4 टाइम्स लैप्लास ऑफ y डैश, लैप्लास ऑफ y डैश इज दिस, सो इट इज नथिंग बट s टाइम्स y प्लस 4 टाइम्स लैप्लास ऑफ y, दैट इज नथिंग बट कैपिटल Y, एंड इक्वल टू लैप्लास ऑफ 0 इज 0. तो नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. दिस इज नथिंग बट ये +3 जो है उसको मैं सामने लेके जाऊंगा, +3 हो जाएगा. सो इट इज 3 from all of them I can take y common. Inside the bracket I will have s square minus 4s plus 4. So therefore my y is nothing but 3 divided by s square minus 4s plus 4, and I think denominator is a good formula of s minus 2 whole square. उन्होंने हमें पूछा था फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी, यानी कि उन्होंने आपको सिर्फ कैपिटल, एंड दैट वी फाउंड इट इज सेम एज 3 डिवाइडेड बाय s minus 2 whole square, and the option B is the correct answer. So with this problem, with this recent problem, I will say we can guess the level to which they want us to go for ODE. Being frank with all of you, ODE और PDE ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, मैं उनसे जितना हो सके उतना दूर रहता हूँ. बट जब मैंने देखा कि जितने लेवल पे उन लोग को चाहिए, इट इज रियली रियली इजी. भले ही वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने लाप्लास को ODE और PDE पे लगाना सीख लिया था. ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में ODE PDE पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू वांट टू कवर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर किसी को समझा? कहीं पर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो. प्लीज गो थ्रू इट वंस. अगर कहीं डाउट रहेगा तो प्लीज पूछे. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? टीवाई स्टूडेंट समझा कि नहीं समझा यार ये? ओके. एनी स्टेप एनीवेयर, बी फ्री टू आस्क. ओके, मंदार इज फाइन. ओके, लेट मी जस्ट पुट वन मोर क्वेश्चन. सो आई थिंक 2 क्वेश्चन उस साल आए थे, यानी कि उसके ऊपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना? Okay, this is also an interesting question. I'll give you, I think, 2 minutes to try to solve this problem. See, they have told us Laplace inverse of capital F of s is f of t. Then, what is Laplace inverse of f of nth order derivative at s? Try to think. I'll give you 1 minute. Then we'll start solving this together. Laplace inverse of f of s is f of t, then Laplace inverse of f का nth order derivative at s.
Okay. Okay. So since to save the time, let us just start discussing it together. साथ साथ में सोचते हैं, ठीक है? So what they have given is indirectly they have told me my Laplace of f of t is nothing but capital F of s, and they are asking me ऐसा कौन जिसका लैपलास लेने पे आंसर आता है f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट s. So that is something that they have asked. First of all, we try to simplify the problem in the way we can understand, right? So from this first given data, I know that integrating 0 to infinity e raised to minus ts f of t dt is same as capital F of s. I try to make the problem into simple part. Suppose nth order derivative नहीं, first order derivative लेता है. So मैं क्या करता हूँ, f का first order derivative लेता हूँ. I'll take derivative over here also. By mistake मैंने यहाँ पे s लिखा था, but it is actually t. ठीक है? So अगर मैंने derivative लिया with respect to x, differentiating with respect to s, since this integration is with the variable t, if I differentiate this entire thing with respect to s, वो क्या बन जाएगा, that would be nothing but partial derivative of the function with respect to s. अगर मैंने अंदर जो फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया with respect to s, the answer would be e raised to t का डेरिवेटिव as it is, but partially differentiating with respect to s, hence the answer would get multiplied with minus t dt. ठीक है? So suppose by using this I think कोई तो एक आंसर गेस किया जा सकता है, but you can even generalize and let me know कौन सा की करेक्ट होना चाहिए. Try to think. What we did, we just took the partial derivative with respect to s on both the side. अगर मैंने यहाँ पे e raised to minus t जो है minus ts उसका partial derivative लिया with respect to s, then it would get multiplied with, by using chain rule, multiplied with minus t. So the option B is correct. Everybody, please. Okay, very good. Sorry. Okay, ठीक है. So it was a simple question. भले ही हम लोग ने इस चीज को कवर नहीं किया था, हम लोग ने कवर ही नहीं किया था कि भाई ऐसा क्या करोगे तो इट विल गेट डेरिवेटिव, बट स्टिल इट केम आउट इन विद इन 3 minutes. Almost we got the answer, right? So option B is the correct answer. 2018 का और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इसको नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रल इक्वेशन. सो व्हेनेवर वी हैव अ नेक्स्ट क्लास, मैं इंटीग्रल इक्वेशन के टॉपिक को कवर करूंगा. बहुत ही सिंपल सा है और उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है? सो विल कवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज आल्सो इंटीग्रल इक्वेशन. दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स. जब कभी भी कोई भी नंबर थियरी कवर करेगा ना, तो आई रिक्वेस्ट कि इस प्रॉब्लम को कवर किया जाए. ठीक है? इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 3-4 साल. सो आई जस्ट वांटेड कि स्टूडेंट इस प्रॉब्लम के बारे में सोचे. डेफिनेटली एक छोटी सी बात कहूंगा, कभी भी अगर एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाता है ना, सो दे डोंट वांट इंडिविजुअली आप फाइंड आउट करो. देयर मस्ट बी सम थियरम और सम ट्रिक विच वुड बी एप्लीकेबल टू गेट द आंसर, है ना? सो नेक्स्ट क्लास तक अगर किसी को ये प्रॉब्लम मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक थियरम है या फिर एक रिजल्ट है वो मैं आपको देने वाला हूं. ठीक है? बट उससे पहले अगर कोई लेके आता है तो वेल एंड गुड. ठीक है? द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर अ नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. किसी भी दो इंटीजर को स्क्वायर करके ऐड करने पे वो नंबर मिलता है कि नहीं. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट. देयर इज अ वंडरफुल थ्योरी या फिर कहूं रिजल्ट है इन नंबर थ्योरी टू गेट द आंसर. ठीक है? सो ये कुछ चीजें है ना जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगती थी, तो मैंने वो प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट किए हुए थे. ओके, सो दिस इज आल्सो एन इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था. इफ यू सी व्हाट दे हैव आस्क्ड टू गेट कि ये कौन से टाइप का है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया है.
आपको सॉल्व भी नहीं करना, यू डोंट इवन हाउ टू सॉल्व, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट इज ऑफ विच टाइप. व्हेन वी कवर दिस इंटीग्रल इक्वेशन, हम लोग इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे. Okay, this is an interesting question. Let me know which of the following is the correct answer. Read the question and let me know the answer. Let others think. I don't think so. B is the correct answer. What about others? B is not the right answer. Yes. Yes, मंदार जी, very good यार. हम लोग ने जो प्रॉपर्टी किया था, that property was e raised to minus 80. Whenever you multiply your function with e raised to minus 80, उसको shift मिलता था a का. In this case, they have just changed minus a की जगह पे plus a ले लिया है. So this minus a की जगह पे plus a है, तो आंसर होगा f of s minus a. ठीक है? We have already done this property. What is something that they have changed? They have just changed plus a की जगह पे minus a, minus की जगह पे plus a. So 2017, they just asked the simple property of Laplace transform. ठीक है? So the correct option is nothing but option A. ठीक है, आगे बढ़े. एवरीबडी अग्रीज टू दिस एक्सेप्ट मंदार. यस, बाकी सबको समझा किस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. आई विल गिव यू सम टाइम, प्लीज थिंक अबाउट दिस. दिस वुड बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे. उसके बाद हम लोग सेशन चेंज करेंगे. बट ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम ज्यादा दूंगा, बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Whatever we have learned will get applied. Let's see आज के सेशन में किसका क्या ध्यान था. बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है. What is the value of this integral where j0 is nothing but the basal function of zero order? सोचेंगे कि क्या लगा सकते हैं. इफ यू सी द फंक्शन, कुछ तो ऐसा किया था क्या आज हमने जिसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. And whatever we just want to find out the value of this integral where j0 is nothing but basal function of zero order. We need to find out this integral. सबसे पहले चीज, ये जो है किसके जैसा दिख रहा है. इज इट समथिंग दैट वी हैव लर्न टुडे? उसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या ये? यस, इट इज कॉन्वोल्यूशन फंक्शन. कैन आई से दिस इज नथिंग बट कॉन्वोल्यूशन ऑफ g0t विथ g0t. सॉरी, j0t, मैं g पढ़ रहा हूं. इट इज j0t. Can everybody observe this thing at least? The given thing is nothing but convolution of basal function with itself. Please verify in the chat box अगर आपको ये दिखता है. अगर नहीं दिखता है तो I'll try to see. Wow, Mandar, it is great. The